Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes. Today's lecture is on work, power and energy. It's the first lecture on work, power and energy. And with starting the lecture, I will start with the work. What is work? What we mean by work in physics? What is its definition? How how work can be calculated in different scenarios, in different cases. That we have to discuss today. But the whole lecture is work, power and energy. First we will do work, then power, then energy. Maybe it takes 2 to 3 lectures, and students have to watch all the 3 lectures to understand it fully. Okay, work. Let me start with point number 1. Work. The total chapter is work, power and energy. Work, power and energy. These 3 we have to discuss. First work, then what is power, then what is energy, different forms of energy that we have to discuss. But first work. How do we define work in physics? Outside physics, you say somebody is exerting himself, somebody is pushing a wall, somebody is having a stone on his shoulder, somebody is pushing a cart in the power direction, and you feel that work is done. But not always. In physics, it has a definition. It has a mathematical equation. When that gets satisfied, only then work is done. I will give you some examples before I will define the mathematical expression for work. जैसे अगर आप कहोगे कि मेरे शोल्डर पर एक स्टोन है, and you feel it is hurting you, you are exerting, and you feel you are doing a lot of work. No, in physics you are not doing any work. अच्छा ठीक है, stone तो है, and now you move with the stone in the forward direction. When you have a stone on your shoulder, you exert a force in the upward direction. That is normal reaction due to this shoulder in the upward direction. That normal reaction, and when you move in the forward direction with constant velocity, they make angle 90 with each other. I mean, normal reaction and the displacement. Again, you are not doing any work. A cricket ball on the ground, when it is hit by a cricketer, it is being stopped by frictional force, not by the gravitational force. In that case, also gravitational force does not do any work. So we need an expression and an equation. What we mean by work done by in physics. Work done in physics means when you exert a force and there is a displacement of the object, and the angle between the force and the displacement is other than 90. It should not be 90 degrees. It should be a favorable angle. It may be less than 90, it may be more than 90, but if it is 90, no work is being done. So, keeping these things into consideration, we define what is the work done. So, I will write down the definition of work. Work is defined as a dot product of force and displacement. That's all. That is F is equal to work done is equal to F dot S. Equation number first. This is the definition for work done. But here, force that we are applying onto the object on which we are doing work, this force must be constant. This is a condition for this equation to hold. Force is constant. ये है work का definition. Work is a scalar, as you may be knowing. Work is a scalar, and it is SI unit is joule. Work is a scalar, and it is SI unit is joule. Okay. Now, let me go further. Work done is equal to F dot S. Work done is equal to Fs cos of theta. As you know, the dot product as it is. That means if theta is 0, work done is cos 0 is 1 Fs,
if theta is 90, that is if the angle between the force if the angle between the force and the displacement is 90, no work is done, work is 0. If theta is 180, then work done is negative, because cos 180 is -1, this is minus fs. So in simple case, if theta is 0, force and displacement are in the same direction, then simply work is the product of force and displacement, force and distance. And if theta is 90, no work is done. And if theta is 180, work done is negative. तो अभी तो मैंने बताया था आपको, if you have a object on your shoulder and you move in the forward direction, ये जो आपका displacement है और ये जो force है, ये आपस में 90 बनाते हैं angle, therefore no work is being done. और जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी आपको दिया, एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और एक क्रिकेट बॉल इज मूविंग ऑन द ग्राउंड विद वेलोसिटी v, इट गेट स्टॉप्ड नॉट बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स कोई काम ही नहीं करता है, इट इज नॉट वर्किंग, इट इज नॉट डूइंग एनी नेगेटिव वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट, सो व्हाई शुड द ऑब्जेक्ट स्टॉप? But object finally stops, I mean the cricket ball finally stops. That means there was a backward force, and this force is frictional force. So it is the frictional force which stops the object, not this gravitational force, because as you see, this gravitational force is perpendicular to the displacement. As such, it is not doing any work. Okay, this is one thing. Second point that I want to talk to you, which is very useful in solving problems. Point number second. Point number second. Don't forget that I have written the expression for work for constant force. Now, second point is, suppose you have a look here, it is object, you are applying force in this direction, and obviously the object will not go into space by applying this force. It has a freedom of motion on the plane. तो ये फोर्स अप्लाई करने से बॉडी स्पेस में नहीं जा रही है, बॉडी आगे जा रही है ऐसे करके, तो डिस्प्लेसमेंट ये है, फोर्स ये है, तो ये एंगल थीटा है. तो वर्क डन एज यू नो इट इज एफ डॉट एस, दैट इज एफ एस कॉस थीटा. तो यहां मैं कुछ करना चाहता हूं सो दैट यू विल लर्न समथिंग अबाउट इट. अगर मैं इस फोर्स के दो पीसेस कर दूंगा कंपोनेंट्स, तो एक कंपोनेंट इस ओर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इस ओर आ जाएगा एफ साइन थीटा. तो वर्क किसके बराबर है? ये डिस्प्लेसमेंट और ये एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई करके देखिए यहां, इसका मतलब मैं वो डिस्प्लेसमेंट और वो फोर्स आपस में मल्टीप्लाई ही करता हूं, प्रोडक्ट ही, लेकिन जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो. So I will multiply that force and that displacement which are in the same direction. I just multiply them, I will get the work done. So here it is SF parallel. मतलब डिस्प्लेसमेंट और वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट को पैरेलल है वही है वर्क डन. या उल्टा कर सकते हो, इस डिस्प्लेसमेंट के दो पीसेस कर सकते हो. एक पीस आएगा इस डिस्प्लेसमेंट का फोर्स की डायरेक्शन में, एक आएगा यूं परपेंडिकुलर टू द फोर्स. इस डिस्प्लेसमेंट का जो एक वो इसके ओर आएगा और ये इस ओर आएगा डिस्प्लेसमेंट का और एक कंपोनेंट. उस सूरत में भी आप वो फोर्स और वो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करोगे जो एक ही डायरेक्शन में हो, या एफ पूरा लिखो एस पैरेलल. Either you can make force the components or displacement the components and multiply that force and that displacement which are parallel to each other, multiply them, get the work done. Sometimes it becomes very easy while dealing with real time problems. वहां आपको कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ वो देखना है. देखिए देयर इज अ फोर्स, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट. अब देखना पड़ेगा मैं फोर्स को या डिस्प्लेसमेंट को कंपोनेंट करूंगा ताकि मुझे वो फोर्स और वो डिस्प्लेसमेंट मिले एक ही डायरेक्शन में, दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे वर्क डन मिल जाएगा. Okay, now this is very important. You can just keep that this in your mind and try to solve objectives, problems, whatever in work. Okay, one point. Third point. Let me make some examples. Let me see if you can understand. अगर ये पेंडुलम है, डाउनवर्ड mg ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैंने और एक फोर्स दिया है हॉरिजॉन्टल फोर्स, एंड इट गोज अप टू हियर. लेट मी सपोज इट गोज लाइक दिस इज लेंथ L, दिस इज लेंथ L, दिस इज थीटा, और आपने यू फोर्स अप्लाई किया. यह है ग्रेविटेशनल फोर्स.
ये है अप्लाइड फोर्स, आपने इस पेंडुलम को पुश करके यहां तक पहुंचा दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एंड व्हाट्स वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज माय क्वेश्चन। इस ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना काम किया व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड टू दिस पोजीशन, और अप्लाइड फोर्स ने कितना काम किया। तो अभी मैंने आपको यह कॉन्सेप्ट दिया है, मल्टीप्लाई force and displacement which are in the same direction, that part of the displacement and that part of the force which are in the same direction. Have a look. तो ये देखिए, ऐसे देखो आप, परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो पार्टिकल यहां से यहां गया, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट फ्रॉम हियर टू, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन उस डिस्प्लेसमेंट का ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये एल है, तो ये सारा एल है यहां से यहां तक, लेकिन ये एल का यहां से यहां तक ये एल cos थीटा है, और ये जो पार्ट हो गया यहां से यहां तक, इट इज एल माइनस एल cos थीटा, और ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, इट इज एल sin थीटा। नाउ आई आस्क यू व्हाट इज वर्क डन बाय दिस फोर्स एंड व्हाट इज वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय दिस फोर्स, यू कैन जस्ट इमेजिन दिस फोर्स, और जब ये बॉडी यहां से यहां गया, इसने ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन उस डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट्स है, एक ये पीस और दूसरा ये पीस। तो इस फोर्स को मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे मिलेगा वर्क डन बाय दिस फोर्स। थिंक फॉर ए मोमेंट, अगेन मल्टीप्लाई दैट फोर्स एंड दैट डिस्प्लेसमेंट व्हिच आर इन द सेम डायरेक्शन टू फाइंड द वर्क डन। तो इस फोर्स को मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? Should I multiply this force, this displacement? No, I should multiply to this force. इस फोर्स ने कितना काम किया, एक तो ये फोर्स, दूसरा वो डिस्प्लेसमेंट जो इसके डायरेक्शन में है। तो आंसर इज एफ एल साइन थीटा। अदरवाइज यू वुड ऑलवेज रेज ए क्वेश्चन, सर वहां cos थीटा का था कॉन्सेप्ट, ये साइन थीटा कहां से आया? लेकिन ये फोर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ये डिस्प्लेसमेंट कर दो मल्टीप्लाई, तो आपको वर्क डन बाय दिस फोर्स मिला। सो व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? एक तो mg, तो जब बॉडी यहां से यहां गया तो इस दौरान कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ? इतना। तो इसको इतना ही डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करना है, दैट इज एल माइनस एल cos थीटा। आंसर। सो दिस इज द कांसेप्ट, मल्टीप्लाई इन दैट फोर्स एंड दैट डिस्प्लेसमेंट व्हिच आर इन द सेम डायरेक्शन टू फाइंड द वर्क डन बाय दैट फोर्स। दिस इज वन पार्ट। ओके, फोर्थ पॉइंट, ये मैंने आपको बता ही दिया कि वर्क डन इज एफ डॉट एस। दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन फॉर वर्क डन। ऑब्वियसली यस, आई मस्ट रिमाइंड यू, इट इज अ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ स्केलर एंड इट इज यूनिट इज यूज्ड इन SI system of units, ergs in CGS system of units, that you have to remember. Okay, now work done is equal to, let me put this force into components. It is IFX plus JFY plus KFZ डॉट करके S के साथ, तो गो ISX या XC लिखो, डिस्प्लेसमेंट X कंपोनेंट XC लिख सकते हैं, JSY plus KSZ। इसका मैंने कंपोनेंट कर दिया और इसका भी मैंने कंपोनेंट किया। ऑनेस्टली इसके 3 डायमेंशनल में कर दिया, इसका 3 डायमेंशनल में कर दिया। As a special case, it can be only 2-dimensional. As a more special case, force may be only in the x direction. तो सिर्फ x component ही होगा। लेकिन in general, we will put the force and displacement in 3 dimensions. We know every vector has got 3 components in 3 dimensions. अच्छा, तो work done is equal to डॉट कर दीजिए, it is fx sx, अगर आपको a dot b का फॉर्मूला याद होगा, it is fy sy plus fz sz। Answer. This is a work done by force. This is a work done. X component of force multiply X component of displacement, X component, Y component of force, Y component of displacement, Z component of force, Z component of displacement. इस तरह से ये करोगे तो आपको force work done मिलेगा by a constant force. Okay, let me give some examples on this. Maybe 2 or 3 examples, so that you become quite familiar with this. Okay. चलिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जरा देखिए। 5th पॉइंट, F is equal to 2I plus 3J. This is force.
डिस्प्लेसमेंट, आर भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, -2k. What is work done? By the rule that we learned, fx sx plus sy fy sy plus fz sz. What's the work done? The work done is like this. Have a look. That is fx sx plus fy sy plus fz sz. The work done is equal to fx is 2, component of force, sx 1, fy 3, sy 1, और इसका k कंपोनेंट है नहीं, इसका k कंपोनेंट 2 है, लेकिन अगर k कंपोनेंट a का 0 हो तो ये 0 हो गया, तो fx that is 2 into 1 plus 3 into 1 plus 0, because fz is 0, that is 2 plus 3, that is 5 joules. Answer. So if you are given force, constant force in terms of components, displacement also in terms of components, you can find the work done. That is the definition of work done. In everyday life, you may have different concept of work. You are pushing onto the wall and you feel you are doing a lot of work. No. Physics will not accept that. आप फोर्स देंगे, जब वॉल डिस्प्लेस होगा तब जाकर कुछ काम होगा. You are moving a body, but you are applying force in x direction and body moves in y direction. No work is done. Okay, I may give you one more example, a few more examples, so that you have a more concept about what is work. Okay, now see here, fifth point. चलिए मैं और एक एग्जांपल देना चाहूँ. A particle moving in a circle, it is a centripetal force F, it is a velocity v. What is work done by this force if it is towards the center? This is a velocity direction. Velocity direction is the same as the displacement direction. So what's the angle between displacement? Velocity direction is the same as displacement direction. What's the angle between displacement and force? 90. Right? Work done is 0. So no work is done by the centripetal force if the body moves with constant velocity, because centripetal force is towards the center is always perpendicular to velocity. If your body moves with uniform speed, although the velocity changes. Okay, sixth example, similar one, sixth. चलिए देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये टेंशन T है, it moves like this, tension is here, it moves like this, tension is like this. What's work done by tension? देखिए वेलोसिटी ये है ना, यहाँ वेलोसिटी ये है, यहाँ वेलोसिटी ये है when the body moves like this in an arc. Tension is this, tension is this. What is angle? 90. Here 90. So please tell me what's the work done by the force of tension on the string, because force of tension is always perpendicular to velocity, right? This much of big zero. Seventh point. So these are the examples which I give on work done. Work done, you must be able to do it. Physics is done by doing things. If I speak out so much, बहुत कुछ मैं बोलता रहूंगा, बहुत कुछ. और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, you are not doing practice with the questions, practice with the objectives, you can't be able to do it. Physics is done by doing it. किसी अच्छे स्कॉलर ने कहा कभी, I don't know, he said physics is not understood, it is done. इसको किया जाता है, करते रहना चाहिए, तो खुद ही समझ आ जाता है. It is not understood by listening, you understand physics by doing. Seventh point, work done. I'm still there on the work done. तो मैंने बहुत हद तक ये किया है. अगर if you want me to do more examples, that can be done. अभी examples क्या है, फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, डॉट भी फाइंड कर सकते हो. अगर एंगल दिया तो उससे भी हो जाता है. और ये भी क्या, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, कंपोनेंट करके वो भी हो सकता है. 3 टेक्निक भी हमने सीखे. एक तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के कंपोनेंट कर दिए और जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में आ गया तो समझो हो गया वर्क डन.
multiply that force and that displacement which are in the same direction. और दूसरा एक सीधे सीधे डॉट कर दो, अगर फोर्स दिया है डिस्प्लेसमेंट दिया है, उनके एंगल के दरमियान एंगल भी दिया है, फोर्स दिया है डिस्प्लेसमेंट दिया है, उनके दरमियान एंगल भी दिया है, उसमें एफ एस कॉस थीटा करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। एफ भी दिया है, एस भी दिया है, कॉस एंगल दिया है, वो भी हो सकता है। और फिर अगर फोर्स एज ए वेक्टर एक्सप्रेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट एज ए वेक्टर एक्सप्रेशन दिया है, डॉट कर दो, हो जाता है। अच्छा, नाउ जो नया चीज अब है, जो चीज इस चीज से नहीं किया जा सकता, जो मैंने दिखाया, दैट इज कॉल्ड वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। उसके लिए नया इक्वेशन है, और उसमें और भी नई नई एग्जांपल्स है। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स अगर है तो वी नो द रूल्स, अगर वेरिएबल फोर्स है तब जाकर क्या करेंगे आप? व्हाट शुड वी डू व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल? उसमें वही टेक्निक लगाया जाता है। देखिए, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये बॉडी है, इस पर आपने फोर्स अप्लाई किया एफ, जो वेरिएबल है एज ए फंक्शन, ये फंक्शन है पोजीशन का, या ये फंक्शन है टाइम का, यानी कि फोर्स चेंज आइदर विद पोजीशन और विद टाइम, वही तो हुआ फोर्स इज वेरिएबल। तो इट देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, ओके व्हाटएवर। तो उस सूरत में क्या किया जाता है? उस सूरत में वही टेक्निक, वो कैलकुलस का टेक्निक होता है। वी फाइंड स्मॉल वर्क डन बाय द फोर्स ओवर विच फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज फोर्स वेरी होता है, लेकिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज एज स्मॉल एज पॉसिबल टेंडिंग टू जीरो। डिस्प्लेसमेंट जितना छोटा होगा, फोर्स तो चेंज होता है, लेकिन उस डिस्प्लेसमेंट के रेंज में वो फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। और हम उस शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन लिखेंगे, मतलब डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन, इज एफ डॉट डी एस, या डी आर भी लिख सकते हैं, दैट इज बेटर, डी एस के बदले डी आर भी लिख लो। दोनों चीजें हैं, डी एस भी लिखते हैं किताबें, डी आर भी लिखा जाता है, डजंट मैटर। दिस इज स्मॉल वर्क डन। अच्छा, आप कहेंगे तो आपने वही फॉर्मूला लिखा, एफ डॉट एस, वहां एस था, यहां डी एस या डी आर है, लेकिन लिखना भी चाहिए क्योंकि दिस एफ इज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट ओवर दैट लिटिल डिस्प्लेसमेंट, वो लिख सकते हैं। फिर इंटीग्रेट करना है दोनों साइड से, ये पूरा वर्क हो गया, वर्क डन पूरा, तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर फ्रॉम R1 to R2, दैट्स ऑल, फिनिश, वी गॉट द इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकंड। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर what you call as work done by a variable force। अगर फोर्स कांस्टेंट है, इसमें अगर आप फोर्स कांस्टेंट रखोगे तो इंटीग्रेशन से ये फोर्स बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हुआ डी आर का, इंटीग्रेशन डी आर का होगा तो डी एंड इंटीग्रल विल कैंसल एंड यू विल गेट एफ डॉट आर या एफ डॉट एस, सो यू आर गेटिंग बैक द सेम फॉर्मूला दैट यू हैव, सो इट्स अ मोर जनरल फॉर्मूला, इट इज गुड इवन फॉर कांस्टेंट फोर्स। ये कांस्टेंट फोर्स के लिए भी ठीक इक्वेशन है, क्योंकि अगर फोर्स कांस्टेंट है, बाहर निकालकर आपको मिल जाएगा व्हाट यू ऑलरेडी हैव इन योर माइंड। दिस इज द इक्वेशन फॉर ए वेरिएबल फोर्स। तो ठीक है, अगर वेरिएबल फोर्स आप होगा, आपका वेरिएबल फोर्स डॉट करो डीआर के साथ, थोड़ा सा 2-3 स्टेप में हो जाएगा और आपका वर्क डन निकलेगा। लेकिन बट यू मस्ट बी हैविंग, यू मस्ट नो बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ऐसा नहीं कि कोई एडवांस मैथमेटिक्स, सिंपल बेसिक रूल्स। अच्छा, तो सेवंथ एट्थ पॉइंट में यही वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जो है, ऐसे देखिए आप, इंटरेस्टिंग चीज है ये, R1 to R2, फोर्स वेरिएबल है, इट मे बी अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, इट मे बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, maybe force is 2x, means force is a function which changes x, या force may be 2t, function of time. In that case, this is the formula. Now I will put one more condition, special condition. If force and displacement are in the same direction, if force and displacement are in the
सेम डायरेक्शन, तब क्या होगा बताइए? हाँ, और सेम डायरेक्शन अगर है तो लेट मी सपोज दैट इज एक्स डायरेक्शन, लेट मी सपोज दैट इज एक्स डायरेक्शन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही, हाँ एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन फोर्स वेरिएबल है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। सो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दैट इज एफ डी एक्स फ्रॉम x1 to x2। ये है रूल। अब आप कहेंगे डॉट कहां गया? डॉट तो गया, बिकॉज जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो cos थीटा जो है cos 0 हो जाएगा, दैट इज 1। तो इट विल बिकम f dx, because it will be f dx cos of 0, that will be f dx because cos 0 is 1। डॉट तो खत्म हो जाएगा if force and displacement are in the same direction। So this, look at this equation, look at it. Before I solve some objectives and problems on this equation, I want to give it one more meaning to this equation। एक और मैं इसका मतलब देना चाहता हूं। 9th पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग में इस इक्वेशन को देना चाहता हूं। 9th पॉइंट, आपको याद होगा जब मैंने लास्ट लेक्चर में, आप अगर लेक्चर फॉलो करोगे, मैं आई हैव रिपीटेडली टेलिंग यू, फॉलो द लेक्चर्स sincerely and honestly, all the lectures, watch them many a times, and then these things will be quite easy for you। तो ये मैंने लास्ट टाइम आपको, अगर ये x है ये y है, ये मैंने आपको बताया था, और ये यहां जो इसके अंडर एरिया है, वो एरिया जो है दैट्स इंटीग्रेशन ऑफ वर्टिकल कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट x1 to x2। ये है इसका मतलब, यानी कि अगर मैं y को इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, मुझे इसका एरिया मिलेगा। जरा मैं इसका अब देखना चाहूंगा, x वर्सेस फोर्स, what is force change with x, and therefore there must be a graph between force and displacement, force and position। तो suppose this is the graph, तो इसके अंडर मुझे बताइए, इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो किसके बराबर होगा? by this rule, by this logic, that will be, area will be integration x1 to x2, yes, it was y dx, what is here? Yes, f dx, f dx। So if you plot a graph between force and displacement and find its area, that will be integration of f dx by this logic, by this argument। Yes, it is also, it is work done, by definition work done, it's work done। तो आपको और एक चीज मिला कि if there is a one dimensional motion, force and displacement are in the same direction, then if you plot a graph between force and displacement, the area under that graph is also work done। if you plot a graph between force and displacement, जो एरिया के अंडर, जो ग्राफ के अंडर एरिया आता है, that is also the work done। it also works here, have a look, it is area but that happens also to be work done। So मैं लिखना चाहता हूं this argument, or you can write it down, that is the area under force versus position graph in one dimensional motion is the work done by that force, that's it। Okay, now let me go to few examples on this variable force, or this variable force, so small examples, fewer ones। एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें से आप वर्क पावर एनर्जी आप निकालो, उसको कर लो आहिस्ते से, वन बाय वन एग्जाम्पल। ऐसी वर्मा भी आपके पास किताब होगी तो उसके एग्जाम्पल्स भी करते रहना, और नेक्स्ट लेक्चर में उसके प्रॉब्लम्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है ऐसी वर्मा और एनसीईआरटी के, वो मैं यहां आपको सॉल्व करके देता हूं। अगर आप फॉलो करोगे सिंसियरली दीज लेक्चर सीरीज, तो क्यों ना आप ये क्वालिफाई करोगे, ये नीट का एग्जाम या आईआईटी का एग्जाम कर सकते हो। इट्स वेरी मच पॉसिबल दैट यू कैन डू इट। लेकिन आपका यह है कि यू फील दैट टीचर विल कम एंड ही विल स्पीक आउट एंड वी विल अंडरस्टैंड। फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी टीचर ऑफ एनी लेवल, देयर आर वेरी गुड टीचर्स टीचिंग ऑनलाइन। जब तक आप खुद नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, वॉच नहीं करोगे, मनी टाइम्स अपना माइंड इन्वॉल्व नहीं करोगे, पेन उठाकर वर्कआउट नहीं करोगे, तो नहीं होगा। So physics is applying your mind and practice and read books also। the NCERT का किताब वो पढ़ो, और किसी क्लास में जब जाते हो, किसी के फिजिक्स टीचर की क्लास में जब जाते हो,
बात सुन लो मेरी, किसी भी क्लास की, किसी की क्लास में जाओगे, किसी फिजिक्स टीचर की क्लास में जब जाओगे, इट इज ट्रू फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, एनसीईआरटी पढ़ कर जाओ, भले आपको कुछ तो समझ आया हो वहां से, लेकिन समथिंग रिमेन्स इन योर माइंड, और जब कल टीचर पढ़ाता है आपको, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट ही सेज. Okay, now possibly ninth point. Is it eighth point or ninth point? Point number 9. Okay, ninth point. So, okay, f is equal to 2x. Simple. 2x, it is variable false. It changes with x. What is work? Work done when body displaces from x1 is equal to 2 meters to x2 is equal to 3 meters. यहां से यहां तक ये बॉडी गया. हमें देखना है कि कितना वर्क किया इस फोर्स ने इस बॉडी को डिस्प्लेस करने में, फ्रॉम 2 meters to 3 meters या 0 to 2 meters, एनी रेंज. So let me do it. Have a look. What is the work done by variable force? That is it. Integration f dx. x1 to x2. That is the formula which we have just done. तो अब फोर्स को दे दो ये 2x. इंटीग्रेशन कर लो अच्छी तरह से. वैल्यूज दे दो x1 to x2. तो होना चाहिए. Let me solve it for you. मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए. सिंपल सा है. I deliberately pick up these simple examples before we go to the better ones and advanced ones, so that first do practice some with these questions. It is integration. Force यहाँ था तो 2x dx, x1 2 to 3 meters. Yes, 2 to 3. x1 was 2 plus 3. That is 2 बाहर आएगा. इंटीग्रेशन x का होगा 2 to 3. w is equal to क्या है इसका इंटीग्रेशन? करते रहना x square by 2. हाँ, इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, बेसिक्स है. 2 to 3 ये खत्म हुआ. वर्क डन इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, दैट इज एक्स को सबस्टिट्यूट 3 करना है तो हो गया 9, फिर एक्स को सबस्टिट्यूट 2 करना हो गया 4. 5 जूल्स इज द आंसर. दैट्स इट. 10th example. 10th example. 10th example. 10th example. Suppose f is equal to t. This is a little tricky. So work done from x is equal to 1 meter या 0 to x is equal to 2 meters. हमें निकालना है what is the work done. तो कैसे किया जाए? ये तो पोजीशन फंक्शन तो है नहीं, ये तो टाइम फंक्शन है. तो आप सीधे अपना फॉर्मूला लिख सकते हो, दैट इज w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx. अपने हिसाब से फॉर्मूला लिखो, फिर देखते हैं आगे जाकर के क्या होता है. मैंने खुद ही प्रॉब्लम बनाया. हो सकता है मैंने इसका मास भी जरूरी देना हो, दैट आई डोंट नो राइट नाउ. अगर मुझे जरूरत पड़ा तो मास भी मैं सबस्टिट्यूट करूंगा, लेकिन फिलहाल तो यही है. ये है x1 to x2 एंड दिस फोर्स इज 2t dt dx. अब t को इंटीग्रेट करना है और x, दैट इज नॉट डन लाइक दैट. ऐसे तो किया नहीं जाएगा. तो मैं देखता हूं मैं क्या करूंगा. somehow I have to solve this problem. Have a look. तो work done is equal to इंटीग्रेशन x1 to x2 2t. ये जो dx है इसको मैं लिखूंगा dx by dt into dt. Is that fair enough? Because dt will cancel out and you are left with dx again. ये खत्म हो जाएगा, आपको dx वही, यही dx. मगर आप कहेंगे हाउ आई डिड इट, या हमको कैसे पता चलेगा हमें ये करना है. ये t है, ये dx है, ये कंपैटिबल नहीं है. अगर t है तो dt यहां होना चाहिए, सो दैट यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. या तो यहां x होना चाहिए. अब यहां t है तो इस dx को कन्वर्ट करना पड़ेगा dt में. एनीवे, सो इट इज w इज इक्वल टू 2t. ये जो है ये वेलोसिटी है इंटू dt x. अब आप लिख सकते हैं t1 to t2. अब आप ये लिख सकते हैं t1 to t2.
अच्छा, अब क्या करना है, अब ये वेलोसिटी जो है इट इज ऑड मैन आउट हियर, ये यहां अच्छा नहीं लगता है, इसको मैं यहां से निकालूंगा फोर्स से और देखता हूं कि फिर मैं इसमें यहां सबस्टिट्यूट करूंगा, तब जाकर हमें पता चलेगा क्या करना है, क्या किया जाए। तो यहां जरा देखिए मैं क्या करता हूं, what I am going to do, have a look, ये है mass into acceleration, yes it equal to t, ये है mass acceleration here dv by dt is equal to t, ठीक है ना, फिलहाल तो ठीक है। अच्छा इट इज, चलो मास में 1 kg रखता हूं, तो dv by dt is equal to 2t dt, 2t dt। अच्छा, now what is dv, that is 2t dt, dv is equal to 2t dt, यहां चला गया। अब यहां इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो तो ये v हो गया। अच्छा 2 यहां बाहर, तो t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, 2 गेट्स कैंसल्ड, इट इज t स्क्वायर। तो यहां जो v है उसका हो गया t स्क्वायर। तो अब जाकर के मैं वर्क डन इज इक्वल टू 2t, v को लिखूंगा t स्क्वायर इंटू dt, लेकिन यहां t1 टू t2 है, लेकिन देखो पहले ही मैंने आर्बिट्रेरी प्रॉब्लम बनाया था, इसलिए इट इज नॉट फ्रॉम x1 0 टू x2 इज इक्वल टू 1 मीटर, इट इज t1 इज इक्वल टू 0 टू t2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये मुझे रखना चाहिए था, आई कमिटेड ए मिस्टेक, आई मस्ट रियलाइज, क्योंकि जब आर्बिट्रेरी प्रॉब्लम इंसान बनाता है तो उसको आगे पता चलता है मैंने कहां गलती की है। तो प्रॉब्लम शुड हैव बीन, फोर्स दिया है टाइम फंक्शन का, मुझे टाइम का इंटरवल देना चाहिए था, आई शुड हैव गिवन टाइम इंटरवल। अगर ठीक है पोजीशन इंटरवल दिया, तब जाकर इस v को आगे जाकर के पोजीशन में कन्वर्ट करके फिर पोजीशन को टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको बनाऊंगा अब t1 इज इक्वल टू 0 टू t2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। जो पहले मैंने x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 किया वो मैं वापस लेता हूं, मैं आई एम सॉरी दैट आई शुड नॉट हैव गिवन दैट इंटरवल, आई शुड हैव गिवन टाइम इंटरवल। ओके, इट इज 0 टू 1, w इज इक्वल टू बाहर, ये t क्यूब हो गया dt 0 टू 1, इट इज w इज इक्वल टू 2, t4 by 4 0 to 1, it is, now what is work done? Now what is work done? Work done is equal to 1 by 2, 2 to the 4, 1 by 2, तो t4 जो पावर 1 ये पावर 4 है तो 1, it is 1 raised power 4 minus 0 raised power 4, when you substitute this t1 and then 0, that is 1 by 2 joules, answer। इसको 2 बार आप कीजिएगा, देखिए जो हमने गलती की है उसको भी दूर कीजिए। with this problem I end up this lecture, but follow the lecture series and don't forget to download the app Tantra Physics classes. Just register yourself there and you will be getting literature, problems, objectives there at that app. बाकी तो जो lectures है they are available at the YouTube, and these lectures are also available at the app. If you want to get the lectures from the app, there you have to pay a little bit of amount to the application, only in hundreds, or if you are not able to pay the amount, then you can watch the lecture on the YouTube, but you have to download the literature from the application. Okay, thank you.